Praise the Lord, church. Praise the Lord. God is good All the time. and all the time. God is good. Let's all stand. Please kindly switch over your mobile phones, or you can put it in silent mode. So before we start our worship service, let's begin with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for this time. Thank you, Lord, that you gathered us over here to worship you in one accord. Father, we surrender this day in your hand as we worship you wholeheartedly. Bless us, bless our pastor, and as he going to preach the word of God, bless him, protect his family, give his family the strength. And I surrender those who are coming to church, bring them over here safely, and bless everyone. In Jesus' name I pray, amen. Amen, amen. Let's all sing this song, Glory to His name down at the cross where my Savior died. As we sing this song, let's all give God the glory by clapping our hands, by raising our voice. We'll sing down at the cross where my Savior died. Down at the cross where my Savior died. Down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am the one that's been saved from sin. Jesus has really advised me. There at the cross when He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh precious fountain that saves from sin. I'm so glad I have entered in. There Jesus saves me and gives me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain. Come to this fountain so rich and sweet. Cast like a soul at the Savior's feet. Blind today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Into my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Amen. Let's sing this song. Only a sinner, nor have I gotten but what I have received. Only a sinner, saved by grace. Amen. Amen. Only a sinner saved by grace. Nor have I gotten but what I received. Grace has bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride I erase. I'm only
sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus has found me, happy my case, for now I'm a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Dear Son of Mary, no Mary had I. Mercy has saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fearing God's face, but now I'm a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Suffer a sinner whose heart overflows, loving his Savior to tell what he knows. Once more to tell him, would I embrace? I'm only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. Only a sinner saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner saved by grace. Amen. Amen. As we remain standing, let's all turn the Bible to 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8, and we have Sister Jessie. She'll come and read from 1 Corinthians chapter 8. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Now a touching thing offer unto idol. We know that we all have knowledge. Knowledge hath puffeth up, but charity edifieth. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing, yet as he ought to know. But if any man love God, the same is know of him. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, there be gods many and lords many. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of all of the idol unto this hour eat, it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak and defiled. But meat commandeth us not to God, for neither if we eat
are we the better, neither if we not are we are the worse. But take heed lest by any means this liberty of you become a stumbling blocks to them that are weak. For if any man see thee, which has knowledge, sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And though thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died, But when he sins so against the brethren and wound their weak conscience, he sin against Christ. together. Wherefore, if many make my brother to offend, I will eat no flesh, while the word standeth, lest I make my brother to offend. Amen. Amen. Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Lord, we thank you for this moment. This morning, O God, we are gathered to worship you, to exalt thy name, to glorify thy name, to praise thy name. We are gathered to say we love you very much, O Lord. We are gathered, O Lord, to celebrate you. We are gathered to say we love you, Lord. Lord, we are so grateful and thankful for salvation. We're thankful for saving us, accepting us, delivering and regenerating us, O God. Lord, we thank you for the Holy Spirit indwelling within us. We thank you for your precious blood, by which our sins are forgiven. Lord, this morning we recognize you as holy, righteous, just, true, and faithful. You're the good God, loving God, kind God. We are thankful that we can have this liberty this morning to come together in this fashion, to sing praises, to lift our voices unto you. To glorify thy name, to say, Lord, we worship you. We are thankful for our family, O God, that you have given. We are thankful for our spouse and our children, for our parents, for our friends. We are thankful for this great church that you are building, and you are building our lives, our families. You are building our visions. You are building our character. You are building our family. Lord, we are in debt to you forever.
and we like it that way. Lord, we thank you that we can serve you in a way that we can, the small things that we can. Lord, as a pastor this morning, I pray for this wonderful church. Lord, that you would open the windows of heaven and pour out the blessings upon each one of these wonderful people, oh God. They have many needs, many prayer requests, some heartaches, and you are aware of each and everything. Lord, we pray that thou will enter in their lives and help them. We pray for peace and joy. Lord, today we are praying that you will save more souls in this coming weeks, months, that we may be able to see fruits of our labor. Open doors for us that we can share the gospel to people. Pray for opportunities. Pray for boldness. Help us to reach out to people, to invite. Lord, we have Bible conference on the 19th and 20th. We are asking, oh God, that you will bless the Bible conference and help our people all to be available, be present for the conference, and that each one will able to bring someone, oh God. God, move among us today and every day. May your hands be upon your children. Bless their financial life, family life, educations, sports, career, relationship, marriage. Grant all of us good health that we may effectively serve you. We give you all the glory and honor. We give you the praise. In Jesus' sweet name we pray. Amen. Let's sing, I come to the garden alone, as we prepare to walk with the Lord and talk with the Lord. And as we prepare for the Lord's table, as we remember what Christ did on the cross, let's sing this song. Still on the man
soul, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go to the voice of hope. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Hallelujah. We have the opportunity regularly to gather together as a family to worship the Lord and also to remember what we are told to be remembered. तो हमारे पास एक मौका है, अक्सर हम यहाँ पर प्रभु की भोर में आकर प्रभु की आराधना करते हुए और ये भी परमेश्वर की मेज के समूह आकर हम प्रभु को याद कर सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है. Now, we can remember even without the elements. और हम इसको बिना लेते हुए भी हम याद कर सकते हैं. The purpose of the Lord's Supper or the Lord's table is to do these in remembrance of Christ. और इसका लेने का जो उद्देश्य है, हम इसको इसीलिए लेते हैं ताकि हम यीशु को याद करते हैं. And the purpose is not the element but a reminder. ये केवल इसको लेकर नहीं, लेकिन एक यादगार के लिए है. And this reminder can be done without the elements also. और ये जो याद करने का है वो इस चीज़ों के बिना भी हो सकता है. It must be done regularly through the teaching of God's word and preaching of God's word. लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रचार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा अक्सर करनी चाहिए. The purpose is to remember what Christ did for us on the cross for our salvation. उद्देश्य यही है कि हमें वो याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए उस क्रूस पर क्या क्या किया है. But the elements adds more subject to it. लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमें और भी ज़्यादा कहीं सारे विषयों को देते हैं. It shows us as we break the bread, we are reminded Christ broke his body. जैसे हम इस रोटी को तोड़ते हैं उस समय हम ये याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा है. The juice when we drink, we are reminded Christ shed his blood for our sin. जब हम इस रस को पीते हैं हम ये याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया है. This element distributed among us, broken and distributed and consumed by us, जैसे हम इसको सबों को बांटते हुए हम खाते हैं और इसको हम खाते हैं सब लोग एक साथ करके, also shows that this is not for anybody and everybody. और ये भी दिखा देता है कि ये हर किसी के लिए नहीं है. A lot of people want to drink and eat. क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं कि इसको पीना चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं. Unbelievers wants to drink and eat. अविश्वासी लोग इसको खाना और पीना चाहते हैं. Unfaithful Christians want to eat and drink. अविश्वास योग्य मसीह उसको खाना पीना चाहते हैं. People who treat church like it is a circus wants to eat and drink. जैसे कि लोग ऐसा बिहेव करते जैसे कि ये सर्कस है जो कलीसिया. People who come only for Christmas and New Year or Easter and the rest of the year they don't come, they want to participate. जैसे बहुत से लोग क्रिसमस के लिए आते हैं, पुनरुत्थान के दिन के लिए आते हैं और उन लोग यहाँ पर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं. It is an insult to the body of Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के शरीर के लिए जो है उसके प्रति असम्मान की बात है. If you're not faithful to the assembling of God's church, you should not participate in it.
अगर आप प्रभु यीशु मसीह के भवन में इकट्ठे होने को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो आप यहाँ पर शामिल नहीं ले सकते। I mean, you can come to church whenever and however, whenever you want. जब कभी भी आप चाहते हैं आप कलीसिया को आ सकते हैं, But if you will treat the church of God as once in a year thing, then it is a big sin. लेकिन अगर आप प्रभु की भवन को अगर आप साल में बस एक बार जैसे अगर आप ऐसा दिखाते हैं तो ये एक पाप है। If you are a Christian, you should fight against the whole world to be in the house of God. अगर आप एक मसीह है आपको पूरे संसार के खिलाफ लड़कर प्रभु यीशु मसीह के भवन में हाजिर होना चाहिए। How many of you believe God gave you power to fight against the devil? आप में से कितने से लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य को दिया है? Amen. How many of you believe if your wife stops you from coming to church, you have the power to fight against her? आप में से कितने से लोग लगता है आपके अगर पत्नी अगर कलीसिया में आने के लिए आपको रोक दें तो आपके पास सामर्थ्य है फिर भी आने के लिए कलीसिया को? It's so easy. I know like 4 people. मुझे मालूम है 4 लोग शायद से। What about the other men? लेकिन बाकी लोगों का क्या? What about the other women? बाकी स्त्रियों का क्या? We have the power to fight against the devil, but not against the people on earth who stop us from worshiping God. हम देखते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य रहते कि शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन जो संसार में लोग रहते हैं उन लोगों के खिलाफ हम नहीं लड़ पाते हैं प्रभु के भवन में आने के लिए। And it is a test. Coming to the Lord's table is a test. और ये आपके लिए एक परख की बात है जो परमेश्वर की मेज में आने से। Do you love God more than the world? क्या आप संसार से भी ज़्यादा प्रभु से प्यार करते हैं? Do you love the Lord more than your wife? क्या आप अपने पत्नी से भी ज़्यादा प्रभु से प्यार करते हैं? Do you love the Lord more than your husband? क्या आप अपने पति से भी ज़्यादा प्रभु से प्यार करते हैं? More than every entertainments of the world? जो कुछ भी मनोरंजन है संसारों में उससे भी ज़्यादा? And a lot of people can say, I'm willing to die for Christ. बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए भी राजी हूँ। The most important thing is not whether you're willing to die for Christ, whether are you willing to live for Christ. ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप प्रभु के लिए मरते हैं कि नहीं मरते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात इसमें है कि आप प्रभु के लिए जी पाते हैं कि नहीं जी पाते हैं। To die, you can die within 1 second. मरने के लिए तो आप 1 सेकंड में भी मर सकते हैं शायद से। Someone shoots you or chops your head, you'll die in a few seconds. अगर कोई आपके गला काट दे या फिर आपको बंदूक से गोली से उड़ा दे तो या फिर आपको सेकंड में आप मर सकते हैं। What about living for the Lord? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने का क्या है? Being consistent for the gospel's sake. कि आप सुसमाचार के लिए लगातार बने रहना, Honoring and respecting and cherishing what Christ did on the cross. और जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसको आदर सम्मान देना। Repenting of your sin when you are not honest and faithful to the Lord Jesus for His gospel and to the church. जब कलीसिया के प्रति यीशु मसीह के प्रति उनके सुसमाचार के प्रति जब विश्वास योग्य नहीं है, लगातार पापों का प्रायश्चित करना। You know, when people don't go to work for a couple of days, they have to go and inform the boss why they are not going to come. जब कोई कुछ काम के लिए नहीं जा रहे होते हैं उन लोग को क्या करना होता है, समय अपने बॉस को मालिक को उन लोग इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। And after coming, they have to inform that they are back. और आने के बाद उन लोग को ये भी बताना होता है कि हाँ उन लोग वापस आ चुके हैं। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? When our children don't go to school, we have to give a leave note to the teacher that my child will not come. जब हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे होंगे उस समय हमें लीव नोट देने होते हैं स्कूल में कि मेरे बच्चे लोग क्यों नहीं आने वाले हैं। But then the church, it can be week after week after week, we don't care. I'm not talking about, I'm talking in general. लेकिन जब कलीसिया की बात आती है तो हफ्ते के बाद हफ्ते, हफ्ते के बाद हफ्ते लोग कलीसिया नहीं आते, बाहरों में जाते हैं। And you know, church is the only place where rain comes that we cannot go to church. आप जानते हैं कलीसिया ये ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश आती है तो और लोग कलीसिया नहीं जा पाते हैं। Monday rain is going to come. सोमवार को बारिश आएगी, People will go to church as work. लोग काम को जाएंगे, Children will go to school. बच्चे लोग स्कूल जाएंगे। Nothing stops job and school. काम के लिए, स्कूल के लिए कुछ भी नहीं रोक पाते उन लोगों Sunday rain comes. को। लेकिन रविवार को बारिश आ जाती The है, whole world falls apart. ऐसा लगता है कि पूरे संसार गिर चुका है। And then we wonder, Christ died for us on the cross. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर मरा। Oh, my wife is not sending me to church. मेरी पत्नी मुझे कलीसिया नहीं भेज रही है, My father-in-law is not sending me.
मेरा जो ससुर है वो मुझे कलीसिया My नहीं भेज रहा husband है, is not sending me. मेरा पति मुझे कलीसिया नहीं भेज रहे हैं, My children are not sending me. बच्चे लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। And then we talk about dying for Christ. और हम ये बात करते कि मैं यीशु के लिए मर सकता हूँ। Christ died for us प्रभु यीशु ने हमारे लिए मरा to set us free from all this fear, ताकि इन सब भयों से हमें वो आज़ाद कर to सके, love God, प्रभु को प्यार करने के put लिए, God first, प्रभु को पहला स्थान देने के show लिए, the world that how much Christ is important for us. और ये दिखाने के लिए कि देखो कि हम हमारे लिए यीशु मसीह कितना ज़रूरी है। Someone said, where there is a will, there is a way. किसी ने कहा अगर इच्छा है तो रास्ता भी मिलेगा। It's not that there is no way, there is a way. इसका मतलब ये नहीं कि कोई रास्ता माध्यम है ही नहीं, But the thing is, do you have a will? लेकिन बात ये है कि क्या आपके पास इच्छा Do है, you want to? क्या आप चाहते हैं, Do you want to be in the house of क्या God? प्रभु के भवन में रहना Do चाहते you हैं, want to honor the gospel? क्या आप सुसमाचार को आदर देना Do चाहते you हैं, want to honor the table? क्या आप मेज को आदर देना चाहते हैं। Christ died for yours and for my sin. मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए मरा है By shedding his precious blood. अपने बहुमूल्य लहू को बहाते हुए। Now Christ is God, मसीह जो है वो परमेश्वर है, holy God, पवित्र परमेश्वर, righteous God. धर्मी परमेश्वर, And he became man and he came into this world for you and for me. और वो मनुष्य बनकर आपके और मेरे पापों के लिए वो संसार में आया। You didn't do any favor to Christ. आपने कोई उपकार नहीं किया प्रभु के प्रति, Christ did everything for you and for me. लेकिन मसीह ने हम प्रत्येक जोने के लिए सब कुछ किया है। And so what we need to do is we need to be radical in our faith and put God first. इसलिए हमें हमारे विश्वास में बहुत देर रहना चाहिए और हमारे So विश्वास को coming दिखाना to the चाहिए। table gives us conviction. जब हम इस मेज में आते हैं वो हमें कन्विक्शन को देता है, That's समझ why को। we bring the blood and the wine and the bread. इसलिए हम द्राक्षरस और रोटी को ले आते हैं यहाँ पर, It can be reminded through the preaching. और ये प्रचार के द्वारा भी याद दिला जा सकती है। But bringing the element is another reminder, a powerful reminder that Christ broke his body and shed his blood. लेकिन जब हम इस रस और रोटी को ले आते हैं ये हमारे लिए एक अनोखा एक याद दिलाने के लिए माध्यम हो जाता है, It brings conviction of our sin and rebellion and laziness. और जो हमारे आलसीपन, घमंड, अहंकारों को जो है हमें याद दिला देती है, It shows us that what am I doing with my life? और ये दिखा देता है कि मैं मेरे जीवन में क्या कर रहा हूँ। Now if you are an unsaved person, अगर आप बिना उद्धार पाए हुए मसीह हैं you should not participate in the Lord's table. तो आपको प्रभु के मेज में नहीं शामिल लेना है। Now we want you to participate, हम चाहते हैं कि आप शामिल हो, but you can only participate when you repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ and receive him. आप तभी शामिल हो सकते हैं जब आप अपने पापों को मानकर स्वीकार कर, जब यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, And then get baptized and be added to the church. उसके बाद बपतिस्मा लेकर इस कलीसिया का हिस्सा बन जाएं। Now if you're saved, अगर आप उद्धार पा चुके but हैं, you're not baptized, बपतिस्मा नहीं लिए, लेकिन you should not participate until you are obedient in baptism. जब तक आप बपतिस्मा ना ले तब तक आप यहाँ पर शामिल नहीं लें। Now if you have not been faithful to God अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं ठहरा and to his church, और उनके कलीसिया के प्रति, you should avoid participating without repenting of your sin and getting right with God in your relationship with him. और यीशु के साथ जो आपका रिश्ता है, बिना उनके सम्मुख आकर आप अगर पश्चाताप नहीं लेंगे तो आप यहाँ पर शामिल नहीं लेना चाहिए आपको। This is not with any hatred, this is with love to protect you from coming under the condemnation of God. ये नफरत वाली बात नहीं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप प्यार के प्रति मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आप कोई भी दंड के अधीन में ना आ सके। Because the scripture says in 1 Corinthians chapter 11 that if you would participate in an unworthy manner, you are coming under the judgment and the condemnation of God. क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला कोरिन्थियों 11 में कि अगर आप बिना योग्य के इसका शामिल करेंगे, इसमें शामिल लेंगे तो आप प्रभु के एक दंड में आ सकते हैं। So this warning is and suggestion, or it's not a suggestion, this warning और ये जो is चेतावनी out of है, love. ये जो चेतावनी दी जा रही है ये प्यार के वजह से दी जा रही है।
to protect you, आपको रक्षा करने के लिए, to encourage you, आपको उत्साह करने के to लिए, repent of your sin. ताकि आप अपने पापों से प्रायश्चित कर मन Say, फिराएं Lord, I'm so और sorry. कहें प्रभु से मुझे आप माफ़ करें, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा करें। You know, I've not been faithful to you. मैं आपके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, I've not been faithful to the church. मैं कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, Forgive me, Lord. मुझे आप माफ़ करें पिता। When you genuinely ask God to forgive you, जब आप पूरे हृदय से प्रभु से अब क्षमा मांगेंगे, He forgives you. वो आपको क्षमा करता है And then you can participate. और उसके बाद आप शामिल ले सकते हैं। If you're not saved, अगर आपने उद्धार नहीं पाया, you need to get saved today. आज आपको उद्धार पाना है And say, oh God, और कहें हे परमेश्वर, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, I know I'm on my way to hell. मुझे मालूम है कि मैं नरक के रास्ते में जा रहा हूँ, I don't want to go to hell. मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, Please forgive me. कृपया करके आप मुझे क्षमा कर। I believe that you are the true living मैं God. विश्वास करता हूँ, मानता हूँ कि आप सच्चा जीवित परमेश्वर हैं। I believe you took my sins upon you. मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, You became man, आप मनुष्य बना, came into this world, इस संसार में आया, died for my sins on the cross मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, by shedding your precious blood. अपने पवित्र लहू को बहाते हुए। I believe you were buried, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको दफनाया गया and on the third day you rose again. और तीसरा दिन आप वापस जी उठा। Oh God, हे परमेश्वर, please save me. कृपया करके आप मुझे बचाइए। The Bible says if you will believe in your heart बाइबल कहते हैं अगर आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं, and confess with your mouth, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, God will save you. परमेश्वर आपको बचाएगा। And today is the best day to be saved. और आज बहुत उत्तम दिन है उद्धार Today पाने is के the लिए। best day to get right with God. और आज उद्धार का आज अच्छा दिन है। Today is the best day to say, I am going to be a faithful Christian from now onwards. और आज ये इतना अच्छा दिन है कि आप बोल सकते हैं कि आज के बाद लेकर आज को लेकर मैं आज बहुत विश्वासों को बनूंगा। Today is the Lord's day. आज प्रभु का दिन है, It's the Lord's day. प्रभु का दिन है। And so the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह He took bread उन्होंने रोटी को लिया and He broke it. और यीशु ने रोटी को तोड़कर And He gave it to His disciples. अपने चेलों को देकर And He said, और यीशु ने कहा, take, तुम लो, eat. तुम खाओ, This is my body, ये मेरा शरीर है which is broken for you जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है and for the sins of the whole world. और पूरे संसार के पापों के लिए। Do this in remembrance of me. तुम ये मेरे याद में किया करो। When the supper was ended, जब भोजन समाप्त हुआ, He took the cup. यीशु ने कटोरी को लिया, He gave it to His disciples अपने चेलों को देकर and He said, उन्होंने कहा, take तुम लो, and drink of this cup. इस कटोरी से तुम पियो, This cup is the new covenant in my blood, और ये मेरी लहू में नई वाचा है which is shed for you and for the sins of the whole world. जो तुम्हारे लिए और पूरे संसार के पापों के लिए बहाया गया। Jesus said, do this in remembrance of me. और यीशु ने कहा, ये तुम मेरे याद में किया करो। Those who would participate, may I request you to stand where you are. चलो शामिल होने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि आप जहाँ पर है खड़े हो जाइए। Please take heed of my warning today. लेकिन आप मेरे चेतावनी को ध्यान से सुनना जो मैंने कहा। Shall we participate together? Father, we thank you that we could participate. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पर शामिल ले सके। पिता, We give you all the glory and honor. हम आपको सारे आदर महिमा देते हैं। We thank you that you took so much pain to save us from sin. धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत दर्द को झेला हमें पाप से बचाने के लिए। Help us not to take it for granted, O हमें God. मदद करता कि हम इसको बस नज़रअंदाज नहीं करें। Lord, we are thankful that you saved us हम आपके आभारी हैं कि पिता कि आपने हमें बचाया है and you made us your children. और आपने हमें अपना संतान बनाया। We give you all the glory and हम honor. सारे आदर महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। As we continue to worship the Lord, let's worship the Lord with our giving this morning.
give unto the Lord our tithes, God's tithes and our offering. I believe you are faithful in giving what belongs to God. Let us pray for the offering this morning. Brother Vicky, you come and pray for the offering. हालेलुया. बाबा तुका अर्घ दिता दिनवासनी तांच्या दिसापासत ह्या वेळापासत तुका अर्घ दिता तुका अर्घ दिता हांगासर आमी एकठांय जाल्ल्या पासत बाबा ह्या ऑफरिंगा पासत तुका अर्घ दिता ह्या बिझनस आनी ह्या जॉबा पासत तुका अर्घ दिता दिनवासनी जेजू हें सगलें तुजें देणें तितूंतल्यान जें कितें आमी आदार जातात जेजू तें आमी ह्या ऑफरिंगा वरवीं आमी दितले पासत सगल्यांक तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. थँक्यू लॉर्ड. आनी ऑफरिंग तुजें उतर मुखार व्हरोंक आमकां आदार जातले पासत तुका अर्घ दिता दिनवासनी. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेजूस. बाबा हांवें मागणी करता तांच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Let's sing, When Peace Like a River Attendeth My Soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. My sin, oh the blaze of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. And Lord, is the day when my faith shall reside. The clouds will roll back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let us sing this song as we go around and shake hand with each and everybody and greet one another. Joshua, if you're sick and you want to take rest, you can sit. You look very pale to me. You can sit if you're not feeling well. Prabhu Mahan Vicharon Kare Tere. Let's go and greet one another. Tell them how good it is to see them in the house of God. कितने अद्भुत जो तूने बनाए, गर्जन भयंकर सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पर प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। बनके बिच में चराए मन में विचरूं, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं। बाहर निशान से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगते शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपने पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार कि क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर रख बहाया कि मेरा प्रशंसा होवे प्रभु